The Election Commission of India, in pursuance of the legal amendments, had made 4 dates, as you are all aware. And this, by virtue of this, there is every quarter, first of the every quarter, one can apply for the registration. And the now onwards, the electoral rolls will be updated every quarter. और निर्वाचन आयोग की इस पहल पर कानून में जो बदलाव किए गए, जिसके कारण 4 डेट्स में संभव है, और अब पोल गोइंग स्टेट्स में नामांकन के दिन तक भी अभी मतदाता में सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। तो इसमें यह भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर इतनी मेहनत करके नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कमीशन ने और फील्ड स्टाफ ने मेहनत की है, तो उनको भी आगे बढ़ के वोट देने आना चाहिए। Friends, I'll also tell you how many specifically benefited by this amendment. I'll come to it and tell you. In an election, voters are our primary stakeholders, and therefore, even those who do not have a voter epic, by and large, we have now ensured that the voting epic card reaches everyone. It's being delivered even now, but by chance, if you don't have, there are these many, almost a dozen other documents through which one can vote. So one need not be worried. What is important is to come to the booth with any one of these, even if one doesn't have an epic. Now the next important thing is the polling station. And that's the next point at which we interact with the voter. The effort is to make the voting experience, it's quite protocol based, but we are still trying that the experience becomes far more enjoyable in the true spirit of the festival of the democracy. Our COs and DOs have been asked to identify the lowest polling percentage booth in each constituency. This is what we are doing to increase our awareness and persuade the voters to come and vote. And they are going personally to the polling stations which are having the least percentage of voting below the average in their each respective constituencies. So they'll try and find out what is the issue, why there is a lesser percentage of voting in those particular booths. They'll try and bring them up to the level of the general voting in that particular constituency. Friends, कमीशन का एक दूसरा फोकस है जो हमेशा रहा है, उसमें आगे हर बार नई चीज जुड़ती है, वो ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर कुछ बेसिक सुविधाएं निश्चित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। तो ये जितनी बेसिक सुविधाएं हम आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, एवरी पोलिंग स्टेशन वुड हैव ए रैंप which is accessible for the PWDs, drinking water, electricity, shade, and volunteers for the PWDs for the old age. Every polling station would be on a ground floor so that it is not problematic for anybody to climb. तो जितना भी comfort polling station पे दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और इन इलेक्शंस में 100% सर्टिफिकेट DO से लिया जा रहा है कि सब पोलिंग स्टेशंस पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही मैनेज्ड होंगे, ऑल पोलिंग पर्सनल एंड ऑल्सो इवन द सिक्योरिटी स्टाफ 100% women oriented. So this is every assembly would have at least one and more in certain pockets. So महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाने का चुनावों के इस माध्यम से भी हम लोग एक बहुत सशक्त माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक्सपीरियंस भी एक बहुत अच्छा हो और साथ साथ एक सशक्तिकरण को भी वो प्रदर्शित कर सके। फ्रेंड्स, सिमिलरली some polling stations will be managed entirely by our PWD staff, or they will be ready to welcome the voters. And आपके माध्यम से ये भी हम लोग कहना चाहते हैं, और कमीशन में बहुत ही इसके बारे में सेंसिटिविटी है, कि जो PWDs हैं वो एक्चुअली बहुत मायने में हमसे बहुत ज़्यादा एबल्ड हैं। उनका चिंतन, उनका भाव
उनके इमोशंस, उनकी सहनशीलता, बहुत चीज़ हम लोगों से ज़्यादा है. So what they require is essentially the equity and equal opportunities, not mere sympathy. And therefore, we are very, very conscious that we will cover all the PWDs, mark them. I'll give you a figure as to how much we have marked all India. And you would be happy to know that. I'll come to that, Silvari.